नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे SAS प्रोग्रामर के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जैसे पहले हम बात करते हैं SAS क्या होता है। तो SAS एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आपको क्लिनिकल डेटा को क्लीन करना होता है, मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना होता है और वहाँ पे कई सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो जब भी आप SAS में करियर करने का सोचते हो तो SAS के सॉफ्टवेयर के बारे में जानना ज़रूरी है। इसमें कई सारे अलग अलग SAS के स्टेप्स हैं लर्निंग के लिए। जैसे बेस SAS है, एडवांस SAS है, उसके बाद क्लिनिकल SAS है। ठीक है, तो जब भी इंटरव्यू में आप जाएंगे ना, तो इंटरव्यू में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछेंगे जो SAS प्रोग्रामिंग के अनुसार है, मतलब जिसमें SAS प्रोग्रामिंग इंक्लूड होता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया है, उसके स्टेप्स मालूम नहीं है, तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। तो आज का इंटरव्यू आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चन विथ आंसर दोनों भी बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये टेक्निकल क्वेश्चन में इस पे ज़्यादा डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले HR राउंड भी होता है जिसमें डिफरेंट आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने ये कंपनी क्यों चूज़ की, आपको करियर कहाँ पे करना है, आफ्टर 5 years वेयर यू सी योर सेल्फ, आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, ओके, और आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है, आपके एकेडमिक्स के बारे में पूछेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूछेंगे और इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन आता है। टेक्निकल क्वेश्चन में जाने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो IT कंपनीज हैं, हेल्थ केयर IT, यहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग होती है SAS प्रोग्रामिंग की। तो क्लिनिकल SAS प्रोग्रामर, क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट, ओके, ये अलग अलग पोजीशंस है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के टेक्निकल राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस में यहाँ पे कवर करूँगा, जिसके आंसर भी इंक्लूड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, what is the basic structure of SAS base program? The answer is, the base structure of SAS consists of data step which recovers and manipulates data, then proc step which interpret the data. Second question, explain data step in SAS. Answer will be, the data step creates a SAS database which carries the data along with data dictionary. The data dictionary hold information about the variables and their properties. Next question, what is proc in SAS? In SAS, proc step analyze and process data in the form of SAS dataset. It controls a library of routines that perform tasks on SAS dataset options such as sorting, summarizing and listing. Next question, list out some key concepts of SAS. So some key concepts of SAS include sort procedure, missing values, keep equal to, drop equal to, data set options, then next data step logic, then reset to missing or the retain statement, next log, next format procedure for creating value formats, then data types, then in equal to data set option. Next question will be, what is the difference between input and in file? So in file is a statement used to identify an external file, but input statement used to describe various variables. Next question, state the difference between in format and format. In format is to indicate SAS that a number should be read in a particular format, but the format is to indicate SAS how to print the variables. Next question, what is good SAS programming practices for processing large data sets? So the answer should be, the good SAS programming practices for processing a large data set is to sort them once using first-ops equal to and OBS equal to. Next question, how SUBSTR function works in SAS? The answer should be, the SUBSTR function is used to abstract substring from a character variable. Next question, what does proc print and proc contents do? Answer should be, to display the content of SAS dataset. Proc print is used and also to assure that the data were read into SAS correctly, while proc contents display information about a SAS dataset. And the next question, what is SAS informats? SAS informats are used to read or input data for external files known as flat files, ASCII files,
text files or sequential files. The informat will tell SAS on how to read data into SAS variables. Next question, name types of categories in which SAS informats are placed. SAS informats are placed in the three categories: character informats, then numeric informats, and then data/time informats. Informats are given here. Next, what is PDV? PDV means program data vector, or PDV is a logical area of memory in which SAS builds data sets. Next question should be, what does SAS stands for and what can it be used for? The answer, SAS stands for Statistical Analytics Software System. It is used to perform advanced analytics, multivariate analysis, business intelligence tasks, and data management functions with predictive analytics. Next question, what are the major features of SAS? The fundamental features that make up SAS include business solution, then analytics services for businesses, then efficient data management, accessibility via DBMS software, then customizable reporting with visualization options offering various graphical formats such as bar charts or scatter plots, alongside classification panels to easily visualize all formats graphs together on one screen. Next question, what is the difference between using the drop is equal to data set options in the data statement and set statement? So the answer should be, when used with the data statement, drop is equal to data set options allows for the processing of certain variables while preventing them from appearing in the new data set. Conversely, when used with the set statement only, it prevents both their appearance and any sort of processing on those specified variable. Next question, what are some of the common programming errors that may occur in the SAS? The problems should be missing semicolon, okay, which is SAS is likely to misinterpret not only the statement missing the semicolon but also numerous following statement. Then unclosed quote and comments. Unclosed quotes and unclosed comments might negatively affect SAS reading of the subsequent statement and give rise to multiple errors. Then unmatched quotation marks. The quotation marks must be matched. Next, unsorted data. The data must be sorted before using a statement that necessitates a sort. Then unchecked submitted program. Submitted program must be checked for log entries. And the last one, invalidity. Invalidity of either the dataset option or the statement option should be avoided. Next question, what type of data can be used in SAS? SAS contains two types of data, character and numeric. Next question, what is the purpose of n and error in SAS? Variable n is typically used to keep track of the number of times a data step has been executed. Meanwhile, error gives information about any error that occurred during execution. Next question, what is the distinction between proc means and proc summary? Answer should be both proc means and proc summary can be used to compute a range of descriptive statistics including the mean, median, count, and sum. It can also compute measures such as percentiles, variance, and quartiles. The main difference between these two methods is their output. By default, proc means prints its result in an open destination like a listing window. However, if the print option has been included within the statement, it will be printed to an output window when using all numeric variable defined in VAR for statistical analysis by proc summary. Next question, what delimiters are used in SAS for special input? DLM and DSD. Next question, what is the base SAS? Base SAS is an older text-based rudimentary integrated developed environment with more basic feature. Next question, what is the difference between no-dupe and no-dupe key? No-dupe and no-dupe key options in SAS are used to remove duplicates observations. The main difference is that no-dupe option eliminates the duplicates based on all observational values, while the latter does so only by looking for identical by variable values. Next question, how do you read variables? To
To read the variables, they need to be read with input statement that include colon or line pointers, informats and length specifier. Next question, what is the difference between reading data from an existing data set and an external file? The main difference between reading data from an existing data set and reading data from an external file is that when SAS reads a pre-existing data set, the value of each variable are kept consistent across all observation. When the reading data through an external file, however, only the individual observation themselves are read. If their variables need to be used again, then they will have to be redefined. Next question, what is BY group processing? BY group processing involves using the BY statement to manipulate the data that has been sorted, divided into groups or arranged in specific order based on certain variables. What is compress is equal to data set? Compress is equal to data set option helps to compress data into new output. What are the formats? It is an instruction used by SAS for writing data values. Next, what are the difference between CEIL and FLOOR function in SAS? So it is a floor. Okay, floor returns the greatest integer less than equal to the argument, whereas CEIL functions returns the smallest integer greater than or equal to the argument. Then the next question, what are the difference between SAS function and procedure? The procedure expect the one variable value per observation, while functions expect the value to be supplied across an observation. Then the last question, what are the default statistics that proc means procedure? Default statistics that proc means procedure are n, min, max, mean, standard, dev. तो ये सारे क्वेश्चंस थे। मोस्टली ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पूरे इंटरव्यू में, तो इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको SAS सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है। तो अगर आप SAS सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, इवन ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एडवांस SAS। यहाँ पे बेस SAS, एडवांस SAS और क्लिनिकल SAS ओवरव्यू सिखाया जाएगा, साथ में स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी है, या फिर हमारे वेबसाइट को विजिट करें www.globalformacademy.com, अदरवाइज इस नंबर पे डेफिनेटली कॉल करें। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो डिफरेंट इंटरव्यू प्रिपरेशंस के जाने फॉर द फ्रेशर, इवन डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट करियर ऑप्शंस के जो कंपैरिजन है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम हमारे डिफरेंट वीडियोस में देते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करें, अपने कलीग्स को शेयर करें, सो दैट वो भी इनका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।